I remember when I was a kid, I used to tell my father that पापा मैं ना बड़ी होकर इंदिरा गांधी बनूंगी. Little did I know about anything as kid. I knew one thing, that I always wanted to make it so big, and then life happened. हम सबको बचपन से सिखाया जाता है कि लाइफ में कुछ बड़ा करो, कुछ अचीव करो, लेकिन फिर इस दुनिया में एलन मस्क, प्रियंका चोपड़ा, मार्क जुकरबर्ग, ओप्रा विनफ्रे, ये सारे सक्सेसफुल लोगों की तादाद इतनी कम क्यों है? उनमें ऐसा क्या है, वो लोग ऐसा क्या खास करते जो एक आम आदमी नहीं कर पाता? वेल, I was also a big dreamer, but I also knew that ये सारे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, मेरे ड्रीम्स को प्लान्स के साथ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. बहुत कोशिश करने के बाद भी मुझसे ये सारी चीज़ें आसानी से नहीं हो पाती थी. तो मैंने सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ना शुरू कर दिया, मैंने पर्सनल डेवलपमेंट में काफ़ी सारे सेमिनार भी अटेंड किए, मैंने अपने गोल्स को वॉल पे लिखना शुरू कर दिया, जर्नल्स खरीदी, विजन बोर्ड बनाया. मैं जर्नल्स में अपने गोल्स को ट्रैक करने लगी, एक के बाद एक मोटिवेशनल वीडियो देखने लगी. मैंने सोचा 5am क्लब मेरी लाइफ चेंज कर देगा, सात्विक डाइट मेरा परसेप्शन हमेशा के लिए बदल देगा, कोई मूवी या बुक मुझे इंस्पायर करेगी. और ये सारी चीजें मैंने थोड़े दिन अप्लाई भी की, जैसे हेल्दी खाना, जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, और उनके बेनिफिट्स भी हुए. लेकिन थोड़े ही दिनों के बाद आई यूज्ड टू गेट बैक टू ओल्ड पर्सन एंड ओल्ड हैबिट्स again and again. Consumption. I couldn't make any kind of progress. फिर मुझे पता चला कि इस दुनिया में मैं अकेली नहीं हूँ. 92% लोग अपना गोल्स अचीव नहीं कर पाते. बट आई वॉज क्यूरियस कि वो 8% लोग ऐसा क्या करते जो उन्हें अलग बनाता है. फिर मैंने इतिहास के वो सभी लोगों पे रिसर्च करना शुरू कर दिया जो अपने गोल्स पे कंसिस्टेंट वे में काम कर पाते थे. और मेरे कई दिनों के रिसर्च के बाद मुझे पता चला इन सारे लोगों में सिर्फ एक चीज कॉमन थी. दे वर क्रिएटर्स नॉट कंज्यूमर्स. और ये सारे लोग कहीं ना कहीं डोपामिन का सच जानते थे. डोपामिन. तो आपने डोपामिन के बारे में क्या सुना है? अ केमिकल इन बॉडी और जस्ट हैप्पी हॉर्मोन्स. लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि डोपामिन आपकी पूरी लाइफ सीक्रेटली कंट्रोल करता है, विल यू बिलीव मी? मुझे यकीन है कि आप मेरा भरोसा नहीं करोगे. उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. अगर मैं आपसे कहूँ कि आप 3 घंटे नेटफ्लिक्स पे मूवी देखो या फिर 3 घंटे बुक रीड करो, आप क्या पसंद करोगे? ज्यादातर लोग नेटफ्लिक्स पसंद करेंगे. रीजन? डोपामिन. देखिए, इस दुनिया में ज्यादातर लोग सक्सेसफुल बनना चाहते हैं. कोई ड्रीम फिजिक अचीव करना चाहता है तो कोई ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता है. बट द ट्रूथ इज दोस 8% सक्सेसफुल पीपल आर कंट्रोलिंग द रिमेनिंग 92% ऑफ कॉमन पीपल थ्रू डोपामिन. तो ये डोपामिन आखिर है क्या? Dopamine is the neurotransmitter which involved in helping us feel pleasure as part of the brain's reward system. इसे आसान भाषा में समझा जाए तो डोपामिन ही एक कारण है लोगों को कॉफी की लत लगती है, फ्रूट जूस की नहीं. जंक फूड का क्रेविंग होता है, वेजिटेबल सैलड का नहीं. लोग मूवी देखना पसंद करते हैं, पढ़ाई करना नहीं. उसका कारण ये है कि डोपामिन को ये नहीं पता कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है. उसको ये भी नहीं पता कि ये सारे एडिक्शंस हमारे लिए हार्मफुल है. उसे तो बस वही करना है जिसमें उसको इंस्टेंट खुशी मिलती है. इसी वजह से सोशल मीडिया अल्गोरिथम बेस पे काम करता है. वीडियो गेम्स में रैंकिंग सिस्टम होता है क्योंकि सारी चीजें हमें कॉन्स्टेंट डोपामिन हिट देती है. हम एक रील के बाद दूसरी रील देखते हैं, एक यूट्यूब वीडियो के बाद दूसरा यूट्यूब वीडियो देखते हैं. डोपामिन की वजह से इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों को सोशल मीडिया, जंक फूड, पॉर्न, अल्कोहल, ड्रग्स, वो सारे सोर्सेज जो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देते हैं, उसका एडिक्शन हो जाता है. हम आज एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनीज हमारे इमोशंस को स्टिम्युलेट करके मैक्सिमम प्रॉफिट कमाती है. यहाँ तक कि साइंस भी कहता है कि हम जो एक्शंस और डिसीजंस अपनी रेगुलर लाइफ में लेते हैं उसका डोपामिन के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है. सो अल्टीमेटली डोपामिन हमें पूरी तरह से कंट्रोल करता है. इसी वजह से इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग क्रिएशन से ज्यादा कंजम्पशन पे फोकस करते हैं.
मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी और दुनिया का हर एक इंसान इस प्रॉब्लम से इम्पेक्टेड है। इसीलिए डोपामिन का सच जानने और डोपामिन के साथ मेरा रिलेशनशिप इंप्रूव करने के लिए मैं 7 दिन के डोपामिन डिटॉक्स पे जा रही हूँ। मुझे नहीं पता अच्छा होगा बुरा होगा, इससे मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, बट दैट्स अ चैलेंज। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी एंड वेट, दिस इज लास्ट डार्क चॉकलेट विच आई एम ईटिंग। Bye. So here are few rules of my dopamine detox. मैं next 7 days तक ये सारी चीज़ें कंज्यूम नहीं कर पाऊँगी। नो सोशल मीडिया, उसका मतलब ये है कि मैंने अपने फ़ोन से सारी सोशल मीडिया ऐप डिलीट कर दी है और मैं अपने लैपटॉप से भी एक भी साइट एक्सेस नहीं कर पाऊँगी। नो डिजिटल एंटरटेनमेंट, उसका मतलब ये है कि मैं टीवी या नेटफ्लिक्स नहीं देख सकती और वीडियो गेम्स भी प्ले नहीं कर सकती। नो जंक फूड और अल्कोहल, उसका मतलब ये है कि मैं अनहेल्दी फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, टी, कॉफ़ी, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें कंज्यूम नहीं कर पाऊंगी। Welcome to my day 1 of dopamine detox. And hey, can I just check my phone? Why? You're not allowed. मतलब I am not going to use obviously social media for next 7 days, but can I just check the notification? I just want to check whether this guy has liked my picture or not. It's your day 1, Jahanvi. Okay, fine. You know, to be very honest, in my normal days जब मैं उठती हूँ तब सोचती हूँ कि 15 मिनट और सो जाऊँ, 10 मिनट, 5 मिनट प्लीज़। लेकिन उसके बाद भी अगर मैं उठ गई then I just grab my phone और सोचती हूँ सिर्फ 5 मिनट सोशल मीडिया यूज़ करूँगी। लेकिन होता क्या है, एक रील के बाद दूसरी रील, एक यूट्यूब वीडियो के बाद दूसरा यूट्यूब वीडियो। I just keep shuffling between these apps. और फिर मैं बहुत इंस्पायर्ड फील करती हूँ, मुझे लगता है कि आज मैं बहुत प्रोडक्टिव रहने वाली हूँ। लेकिन सच तो ये है कि मैं इंस्पायर्ड नहीं हूँ, ओवर स्टिम्युलेटेड हो गई हूँ, जिसका मुझे भी अंदाजा नहीं है। इन रियलिटी अर्ली मॉर्निंग में ही मैंने अपने आप को इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ईमेल से डोपामिन का इतना ज्यादा डोज दे दिया है कि अब पूरा दिन मेरा ब्रेन मुझसे और डोपामिन डिमांड करेगा और ये डिस्ट्रैक्शन के वर्लपूल से मैं खुद भी अपने आप को नहीं बचा पाऊंगी। बट एज टुडे इज माई डे 1 ऑफ dopamine detox, I cannot use this distraction in my life, so I think I don't have any other option but I have to start my day maybe doing yoga, meditation and then go for a run. So let's start this day. Alexa, can you play yoga with Sattvic movement? I found these results. Alexa doesn't know all shit. So this is my first day of dopamine detox and it's early in the morning. I can't tell you how good I'm feeling within, like I'm feeling like what if I follow this schedule every freaking day? I think it will be a hell of a good life, like hell of a good life. और ऐसा नहीं है कि डोपामिन डिटॉक्स का मतलब ये नहीं कि आप अपनी बॉडी में से डोपामिन रिलीज़ नहीं करते। नो, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट कि आप अपने सोर्सेज चेंज करते हो। जैसे कि अभी मैं रनिंग के लिए आई हूँ एंड आई एम गेटिंग डोपामिन फ्रॉम हियर। कितना टाइम लगेगा आपको ये पूरा करने में? अब ये सारी ये होगी है ना, खराब होगी है, डालो ने खराब कर दिया, अब टाइम तो लगना ही है। ये बहुत थेरेप्यूटिक लगता है, मन को शांति मिलती है इससे थोड़ी। मुझे रख लो जॉब पे फिर। फ्री हूँ मैं, कर दूँगी ये।
So it's 8:45 and I'm back from running. I read this book 5 a.m. Club by Robin Sharma, and he says very beautifully that morning में if you do 3 things your life can be extraordinary, which is like movement, meditation and mastery. आप देख सकते हो मतलब इतना टाइम में how much I already have done, जो टाइम हम सोने में बिता देते हैं. So I came here for work and it feels very strange because after overstimulation जब हम कोई काम करने की कोशिश करते हैं तो ब्रेन काम हमेशा बाद में करने का मन करता है. ब्रेन कहता है कि वो सारी चीज़ें करो जो एक्साइटिंग हो, इंटरेस्टिंग हो, जिसमें ना मज़ा आए. तो you always feel like let me just check Instagram, let me just check YouTube. एक YouTube वीडियो प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि हम जब कोई हाईली स्टिमुलेटिंग एक्टिविटी में अपने आप को एंगेज करते हैं, हमारा ब्रेन हमसे और स्टिमुलेशन डिमांड करता है. तो जो मेन टास्क होती है वो हमेशा डल एंड अनअपीलिंग लगने लगती है और वो हमेशा बाद में करने का मन करता है. एंड दैट टुमारो जस्ट नेवर कम्स. बट टुडे एज आई एम ऑन डे 1 ऑफ माई डोपामाइन डिटॉक्स, इट सीम्स लाइक आई हैव टू वर्क हार्ड बिकॉज आई कैन नॉट टच दिस पॉइजन. बट मुझे अभी ना कॉफ़ी की बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही है. कैन आई हैव लाइक 1 ड्रॉप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़? एक बूंद से नहीं ब्रेक हो जाएगा यार. You are not allowed, Jahanvi. You are a very, very bad person. Very bad. I know that. कभी किसी को ये बोलते हुए सुना है कि अरे एक कॉफ़ी से क्या होगा, एक सिगरेट से क्या ही हो जाएगा. ये बात शायद सच भी है. एक सिगरेट या कॉफ़ी से कुछ नहीं होता. लेकिन अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में लाखों करोड़ों लोग शुगर, सोडा, अल्कोहल, फास्ट फूड, सिगरेट्स, ड्रग्स, ये सारी चीज़ों से एडिक्ट क्यों है? According to one research, around 30 to 40% of world's population consume coffee every day. Not only that, collectively, cigarette, alcohol and drug use kills 11.8 million people each year, which is more than the number of deaths from all cancer. A study done on rats shown that sugar is more addictive than cocaine. See, here the problem is not an awareness, the problem is execution. Every coffee addict, every drug addict, every smoker knows that it's not good for them. Then why can't they stop? Why can't they just not having it? छोड़ क्यों नहीं देते? The reason is neurochemical called dopamine. When we consume coffee, cigarettes, alcohol or any sugary fat food, our brain releases neurotransmitter called dopamine from VTA area of brain. The brain knows that when a person eats such things, they are doing something right and it releases feel-good chemicals in the reward system. तो ये न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन जिससे हमारा ब्रेन एक प्लेजर समझता है. हमारा ब्रेन इस तरह से ट्रेन हुआ है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डोपामिन रिलीज करके प्लेजर को फील करना चाहता है. उसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. अगर आप कॉफ़ी पीते हो तो आपको कैसा महसूस होता है? अच्छा, बहुत अच्छा. लेकिन अब आपका ब्रेन वो सेम बहुत अच्छा फील करने के लिए आपसे एक और कॉफ़ी की डिमांड करेगा. 1 more coffee please. लेकिन आपने जो पहली बार कॉफ़ी पी थी उसमें आपको जितना मज़ा आया था उतना मज़ा आपको तीसरी कॉफ़ी में नहीं आएगा. सो सेम फीलिंग अचीव करने के लिए आप बहुत सारी कॉफ़ी पियोगे. Now you are already addicted and you will need that every day to achieve that same sense of pleasure. अगर इसको साइंटिफिक वे में समझे तो जैसे ही आपकी D2 रेसेप्टर्स की सेंसिटिविटी कम होती जाती है, आपका अमाउंट ऑफ प्लेजर भी कम होता जाता है, जिस कारण आपका कंजम्पशन और बढ़ता ही जाता है. This is where the food industry comes in. In this industry, marketers spend millions to encourage us to buy their products. They discovered that adding salt, sugar, caffeine, nicotine, fats make food more palatable. And this food creates tolerance in our body and often increase our temptation to consume more and more and more. And we overdose it in our system and companies make $1 million profit from us by using dopamine as their weapon. And the worst part is, we are aware about it. Our conscious brain knows the truth. We regret eating those things. We try to escape those habits. We think that from tomorrow, I will stop having that. But some part of our brain disagree and we end up doing emotional eating and it becomes a vicious cycle.
The problem with all these addictive food items is that it can cause a reward that is way more powerful than any other reward the brain can get from wholesome food. But like, how to solve this? How to reduce our intake of such addictive things? For that, we have to train our brain to have cravings of like fruits, vegetables or wholesome grain. But isn't it funny, like कोई रेस्टोरेंट में जाके क्यों वेजिटेबल सलाद और फ्रूट्स ऑर्डर करेगा जब हमारे पास इतने सारे डिलीशियस फूड के ऑप्शन है. बट दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे, डूइंग हार्ड थिंग्स which gives us joy and happiness for longer time. So today I'm going for the food fasting and hoping that जब मेरा दिन ख़त्म होगा तो लास्ट में my mouth birds will crave for some healthy things. So basically we are training our mind to get dopamine from healthy food. So let's start this journey. भूख तो मुझे अभी इतनी लगी है ना, सच में मैं कुछ भी खा जाऊँ. लाइक सोयाबीन भी खा सकती हूँ, पनीर भी खा सकती हूँ. What is that? वो वाला क्या है? It's दही वड़ा. सादा डोसा खा लूँ क्या? वो तो हेल्दी होता है ना. सादा. You're not allowed. I ordered this. This is South Indian छाछ होती है. Okay, so it's 12 o'clock noon right now and the weather is very pleasant today and I'm having this watermelon juice. You know, I don't know, it's very strange but मुझे अभी ना टमाटर की cravings हो रही है. So in our Gujarati there is a कहावत जैसे कि ना मामा करता काना मामा सारा. It means कि when you don't have any other options, आपके पास जो भी होता है ना आपको वो अच्छा लगने लगता है because you don't have too much expectation. So आपको लाइफ में really healthy खाना है ना तो extremely अपने आप को force करके just have those kind of foods. So I'm having this watermelon juice. So in Ayurveda they say कि juice को पीना नहीं चाहिए, चबाना चाहिए. So जन्नत जैसा फील हो रहा है ये अभी. तो बेसिकली क्या है ना कि आज का जो पूरा दिन था ना, आई हैड लाइक ओनली जूस, टमाटर एंड देन ओनली लाइक फ्रूट सलाद एंड वेजिटेबल सलाद एंड एवरीथिंग. तो आज शाम को मुझे क्या खाने का मन कर रहा है? तो मुझे खिचड़ी खाने का मन जेन्युइनली कर रहा है बिकॉज पूरे दिन आई ओनली हैड दिस थिंग. नो, सो दिस इज़ हाउ आई एम ट्राइंग टू ट्रेन माई ब्रेन टू डू द राइट थिंग्स, टू डू द हार्ड थिंग्स. And I think you have to just decide, right? I mean, you have to. मेरे दोस्त मुझे बोलते हैं कि why are you torturing yourself? But this is how you have to train your brain. आपको unlearn करनी है जब चीज़ें आपने जब 25 साल से सीखी है. So I think this is the only way we can do it. The truth is, it's not hard to build healthy habits, but for that we have to understand the truth of dopamine from scientific perception and training our conscious and subconscious mind in a way that we crave for right food. To get rid from emotional eating, vicious cycle of addictive food and corporate traps, we have to take one step at a time. Remember, it's a choice. Hey, so it's around 5 o'clock in the morning और मैं आज इतना effortlessly उठ गई हूँ. Actually daily what happens, so you feel like 5 minutes more, 10 minutes और मैं हमेशा सोचती हूँ कि कल से मैं उठूँगी, परसों से उठूँगी, but it just never happens. But I don't know, my night routine has changed as I'm on dopamine detox. I'm not consuming any kind of content. I'm not watching Netflix. तो आज मैं बहुत ही ज़्यादा peacefully और effortlessly उठ गई हूँ. And you know, I'm also getting more clarity. I'm also feeling more positive and I'm feeling super energetic even early in the morning. So right now we all are going for sunrise. बहुत सालों के बाद finally I'll witness sunrise today. Oh my God, this is so overwhelming.
So my friends always ask me that why you need to wake up so early and go for sunrise, like why? I understand that watching sunrise will not increase our GDP, it will not help us in economy, it will not even fix our problems. But you know what? It's important because it will make us realize that how big this universe is and how tiny little our existence is. So it's very important. टैप है और उसके बाद स्टार्ट करना। So I woke up around 5 o'clock today. Finally, I don't remember when is the last time I actually witnessed sunrise. So I came for sunrise. I did cycling. The sun is already up, but I can't see it. Mountain के थोड़ा पीछे है. Come here. Hello, you wanna say something to my camera? Say like, share and subscribe to my audience. Say. So this is the sunrise I was waiting for. I don't know yaar, whenever I witness the sunrise, I just feel super overwhelmed. I feel the sun rays are just healing my body. The rays are healing my procrastination, self-doubt, negative self-talk, I think मुझे याद नहीं है कि लास्ट मैंने सनराइज अपने लिए खुद कब देखा था. I mean maybe some few years ago, I don't remember. खुद के लिए just उठ के just to witness sunrise. This is what I want to do यार. Focusing on the things which matters. Okay, so it's around 9:30 and I'm already ready for the walk. Actually मेरा जो नॉर्मल डेज होता है ना वो यहाँ से शुरू होता है. लाइक मैं 9 बजे उठती हूँ, उसके बाद स्टिमुलेशन, कंजम्पशन और उसके बाद 9:30 को आई गेट रेडी एंड आई गो टू द कैफे एंड वॉक. बट मुझे तब ऐसा लगता है कि आई बी सुपर प्रोडक्टिव. बट होता क्या है, एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ होता है. बट आज आई एम अवे फ्रॉम दिस पॉइजन. कहाँ है वो पॉइजन? माई फोन इज़ लाइक समवेयर, आई डोंट रिमेंबर इवन. एंड इसमें मैंने आज के दिन में क्या क्या करना है वो भी लिखा है. सो आई डोंट थिंक आई डू हैव एनी अदर ऑप्शन बट आई हैव टू बी फोकस एंड कॉन्सेंट्रेटेड ऑन माई वर्क टुडे. आज का मेरा सिर्फ कन्फ्यूजन इतना ही है कि मैं ये पहनूँ या ये पहनूँ. व्हाट अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, राइट? सो या लेट्स गो फॉर अ वॉक. दिस इज़ बेटर. In Bhagavad Gita, there is a saying about dharana. Just because I was away from all this instant gratification sources, I could achieve dharana. This can be achievable by concentrating on internal thoughts or an external object around you in the outside world. So I have realized that you don't need to work for long hours, but I need to get a flow and work without any distractions. See, it's not hunky-dory. At some points, it gets so boring, amusing and dull. But here is the thing. Just don't give up because we are training our brain to do hard things. To be very honest, I am usually a very lazy person. I can't wake up so easily for sunrises like this. I have realized that from years and years, so many people are trying to wake up early because somehow they are also aware about the benefits of early morning energy.
मुझे ऐसा लगता है कि खराब आदतों की एक विशियस साइकिल होती है। हम उसको आर्टिफिशियल वे में थोड़े दिन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वापस हम जैसे थे वैसे हो जाते हैं। लेकिन हम जब इन आदतों को जड़ से मिटा देते हैं, I don't think life remains the same after that. I felt like dopamine detox is one of the best way to get rid of such habits. Ultimately, you have to take massive action, and for that, you have to first work upon reducing your stimulation. Trust me, after that, magic is going to happen. A completely new life is waiting for you. It's just one choice away. So, आपने लास्ट टाइम मेडिटेशन कब किया था? मेरे ख्याल से 2 साल पहले। मेडिटेशन लास्ट टाइम नहीं, मैंने आज तक कभी मेडिटेशन किया ही नहीं। मेडिटेशन तो पिताजी किया करते थे। मुझे लगता है कि ध्यान तो हम किसी भी जगह कर सकते हैं, मेडिटेशन करने की ज़रूरत क्या है उसके लिए। मैं अभी ध्यान दे रहा हूँ इधर कैमरे पे, पूरा ध्यान दे रहा हूँ, मेडिटेशन ही कर रहा हूँ एक तरह से। फोकस कैमरा दो मुझे ज़रा, मैं करके दिखाऊँ आपको, बहुत अच्छे से आता है। इसका तो कोर्स किया मैंने। मेडिटेशन करके कुछ मिलता होगा तो जरूर मेडिटेशन करते कुछ भी मिलता नहीं। The Center for Collegiate Mental Health has found that the top 3 diagnoses like anxiety, depression and stress has proved that the high social media use and high anxiety has direct relationship. 90% of 18 to 29 years old are on social media. We spend an average 2 hours a day there. We don't even eat or read for 2 hours a day. And you know the worst part is we think that social media is free, but the truth is it does use us as product, and we end up comparing ourselves with others, and because of that half of the generation goes into this negative self-talk. Just think, we constantly live into this FOMO, highlight reels and distractions and comparison. On a personal front, I started my YouTube channel 4 years back, and my views were little less than fellow YouTubers, and I went into this deep anxiety that I'm not good enough, I'm not smart enough, I'm not beautiful enough. You know, rather than focusing on working upon my craft and learning few technicalities and being a better person, I went into this loophole of numbers and external validation. For example, if your day is going great, right, and suddenly you check your phone and you are like, oh my god, what she's doing, what you are doing in your life, she's just so young. And then you see some celebrities and you are like, wow, they are just so perfect, they are just so gorgeous. Or some of my friends tell me, no, it doesn't matter, like I don't get impacted by it. But you know what, it does impact our subconscious mind and in our decision making power in a very bad way. People feel lonely because of social media. They think others do have better partner, better look, better money, and they live in this loophole that I'm not good enough. To be very honest, I don't want others to make decisions for me. I want to take control over my life. I want to take actions for my life. And for that, on a day 4 of my dopamine detox, I'm going to do amazingly boring stuff like meditation. So let's start this journey. Where are you from? I am basically from Gujarat. What about you? I'm originally from Germany. I came from America recently. Okay. I was stuck in Los Angeles. Oh my god, that's good. It's almost cleaned up. Okay, so today is my day 4 of dopamine detox, and I came here to Deer Park Monastery and I did gardening, and now I'm going to sit for meditation for next 1 hour. Let's see what's gonna happen. So I want to train my mind in a way that I get dopamine from this source. Like मुझे इसमें इतना मज़ा आने लगे कि I'm like yeah meditation करना है 1 घंटे के बाद. You know, I should feel excited about this. This should not feel like tough task. So that's what I want to do. So let's see. अभी exactly हुए हैं 5:31 PM और मैं अलार्म सेट करूँगी. Let's just do it, okay? Okay, so Alexa,
Alexa, remind me after 1 hour to break my meditation. So okay, it's almost 7:01 right now. और मैंने आधा घंटा ज़्यादा कर लिया बिकॉज आई डोंट नो रिमाइंडर बजा था बट मुझे समझ नहीं आया. आई थिंक आई वॉज क्वाइट इन टू दैट जोन. Overall, I felt like we have too many thoughts in our head, and most of the time, most of the thoughts are basically negative. I feel like human beings are basically negative people. That's why we have to say, na, be positive, because किसी को ये नहीं बोलना पड़ता कि be negative, because that's so we already are. I just did it for 1 hour, so 1 hour में कोई बुद्धा नहीं बन सकता. I'm sure about it, but it's a practice, and we'll reach there. I'm very happy. The problem with our modern society is that we are trained to get instant joy from the things like cigarettes, alcohol, social media, junk food. Well, but to get slow and steady joy, we have to do things which seems dull and unappealing at first place but has numerous benefits. In Dopamine Detox, we are training our brain to find joy in meditation, not in random social media scrolling or alcohol. Well, it's not an easy journey, but not impossible. कभी किसी को ये बोलते हुए सुना है कि तुम्हें पता है मैं क्या देखता हूँ, तुम्हें तो समझ भी नहीं आएगा. ब्रो, you are just consuming. What is the big deal in consumption? हम consumption में ही अपने आप को हीरो मानने लगते हैं. We live in an era where half of the generation is busy in consumption of addictive things, consumption of content, just consumption. And this consumption also invites mediocrity. You know, we consume things and then we also do the imagination that one day I will be doing it. And that also gives us dopamine hit. That is the reason we want to watch more and do less. We want to read more and write less. We want to watch that exciting dance reel on Instagram, but we don't enjoy learning the dance form. We want to watch basketball match, but we don't want to spend hours and hours in learning and practicing that sport form. We love to watch those gardening cute videos, but we don't want to make our hands dirty in the soil. The truth is, consumption is easy, production is tough. Today on day 5 of my dopamine detox, I am going to convert myself from a consumer to creator. So let's start this journey. This is good. ये वाला शॉट जो है मुझे ऐसा लग रहा है पाइन फॉरेस्ट में बहुत अच्छा जाएगा. Too aesthetic. And open that salsa one. Okay. Yeah. हाँ. That's amazing. Oh dude, look at this. Yeah. Why? Oh my god. Okay, so today is our day 5 of dopamine detox और आज हम लोग फोटो शूट करने के लिए जाने वाले हैं. So we are just deciding the theme. I want to go for like larger than life, like Karan Johar type lavender and like chiffon sari and something like that. And we will be going to, I think, pine forest. I think वो wooden का color, or I think I'll wear something like purple color. What do you say? Purple sari. हाँ, lavender से match करेगा, right? हाँ. So this is the plan for the day. 2 tasks. One is pine forest and one is salsa. Because ये तो touch कर नहीं सकते. And laptop में भी I'm only touching Pinterest because we have to have some references for the shoot, right? So, Yeah, let's just create. Yeah. Let's just I'm very create. excited. So today is the creating day. Creators Day. कितना शर्मा रहा है आदित्य. See, I have always been overstimulated, right? Consumption. So right now I'm just so away from all these instant gratification sources. I'm finally able to focus on the things which matters and, you know, things which I always wanted to do. For example, I'm a big Karan Johar fan. Like I love all these films like Kuch Kuch Hota Hai and Dilwale, and I always wanted to wear this chiffon sari in the mountains and do all this pose. But see, inspiration is not a problem, but you have to take massive action. You know, we always find fun in just inspiration. So today I finally came here and I'm going to take all those shots.
someone who consume lot of cinema. Like I watch Iranian cinema, Korean cinema, even sometimes I watch Chinese cinema too. See, consuming is so easy, but doing it is so hard. Even when it comes to theater or dance form, I watch like Kathak and everything. But doing it is tough. Like suppose आप डांस जब देखते हो तो कितना अच्छा लगता है, वो पूरा फ्लो में जाता है, राइट? बट उसको सीखना बहुत डिफिकल्ट है. Like 1 2 3 1 2. It's so tiring and exhausting process. Okay, so here is my friend Aman and we both don't know salsa, bachata, kazumba, कुछ भी नहीं आता, but we are going to learn. And ये ना सिर्फ ऐसे ही नाटक कर रहा है. आता है तेरे को salsa? थोड़ा थोड़ा. झूठा कहीं का. So let's see. Don't judge. Right now, there is no noise in my mind, so my creativity is also flowing. I am able to observe my surroundings while not only walking but actually every moment along the way. Before I started this detox, I had too much noise in my mind. I was so consumed in other people's life. My mind was constantly doing chatter putter as I was occupied in a thing which just doesn't matter. Now I'm able to cut the noise and embrace my life however it is, whatever it is. This is my life and I own it. I'm accepting myself just the way I am. I'm also accepting my content just the way it is. I'm feeling like my brain has some sort of reset. You know, when you are converting yourself from consumer to creator, it will be a tough journey. You will have self-doubt. You will feel like, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ आ नहीं रहा है. Look at her, she knows everything. I don't know anything. I'm not good enough. But you know what? Still keep creating. Because with practice, you may reach where you want to reach one day. But if you'll only consume, you are not going anywhere. Trust me with that. Action. You know, so from last 3 months, like I wanted to make my channel intro. I'm also changing my channel name from Journeys Within to Vibing with Jahanvi. I mean, different people have different opinion, but I wanted to do it anyway. But I don't know, I was just finding it so hard to just sit there and, you know, decide the theme and like start working upon the channel intro. But as I'm on dopamine detox and I'm away from every kind of noise, it seems so effortless to me today कि मुझे नहीं, I don't care what numbers I will get and what kind of validation. I just want to do it for the sake of doing it, you know, for the joy I get while I, you know, work upon my dreams. Today on day 6 of my dopamine detox, work seemed effortless to me. We sat for 2 hours, decided the theme, and I wanted to go for vintage, bohemian and cozy theme. There are 6 subjects on my channel which I wanted to cover. Travel, self-care, movie therapy, sunset, spirituality. I'm also going to cover environment-friendly products and how they are need of an hour. So me and my DOP Aditya, we were totally involved in the process, and it's just the most beautiful thing to work upon your dreams without looking for any kind of external validation. We are shooting something so great, so I'm anyway changing my channel theme, right? So my channel name would be Vibing with Jahanvi, and right now we are shooting this environment friendly products का जो एक 30 seconds का like intro we are shooting, and I'm just so obsessed with all this thing. Like this is menstruation cup, this is like
eco-friendly conditioner. This is all. This smells so good, and this is bamboo toothbrush and straw and everything. हम कितना like literally I'm feeling like we are a small production set and we are doing it so professionally. And so my channel will be now all about energy, vibration, aura, frequency, manifestation, habits that can make us feel better about ourselves. So, and yeah, there will be travel videos, but travel videos are just too overrated. So we are finding some different themes. So we have two cameramen, there is this camera, there is tripod, and so many things are happening. So I'm going to cover another topic in my channel which is called movie therapy, जिसमें मैं ना हर किसी को अपने emotions के हिसाब से I'm going to suggest movie like how you feel today. You feel like you want to feel love, then watch this movie. So that's what we are shooting. The only problem right now we are having is that ये lights थोड़ी सी रह नहीं रही है because of the wind and all. So we are going to keep Before Sunrise because Before Sunrise is one of my favorite film. So we are just setting up. So this is the setup and it's so much fun to shoot all these things. Like पहले मैं ना ये सब देखा करती थी, like I have वो इंस्टा में आता है ना saved वो सब करती थी, but I never took any kind of action. But finally today I'm doing all these things and trust me, doing is more fun. I'm loving it. सो वी आर डन विद द शूट एंड हमने जो चैनल के 5 टॉपिक्स है वो कवर कर लिए, लाइक सेल्फ केयर, स्पिरिचुअलिटी, ट्रैवल, एनवायरनमेंट एंड व्हाट एल्स, मूवी थेरेपी. एंड मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी आर्ट क्रिएट करने के लिए यू हैव टू गेट कंज्यूम्ड बाय इट, अदरवाइज मीडियोकर वर्क ही क्रिएट होगा. आई मीन आप कुछ काम कर रहे हो एंड अगेन यू आर गोइंग द ट्रैप ऑफ डोपामिन एंड देन यू आर स्टिल क्रिएटिंग. सो आई थिंक वी आर इन्वाइटिंग मीडियोक्रेसी in this dopamine world. What else? I heard, like I was just watching Sanjay Leela Bhanshali's interview and he said a very beautiful line. He said, while I was making Gangubai, I just didn't allow any other world to, get into me. So to create, आज मुझे ऐसा realize हुआ कि to create any kind of art and to be excellent in that, you have to be consumed by it. You have to just be in that process. So हमारा शूट डन हो चुका है. Now we'll be going home and we'll see the footages और हम कल edit पे बैठेंगे. So wait for the result. तो अभी हम एडिट कर चुके हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि एडिट बहुत ही अच्छा निकला है. और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी टाइमलाइन ऑलरेडी बन गई है और ऐसी कुछ विंटेज फ्रेम हम दिखा रहे हैं एडिट पे और आपको दिखाएंगे फाइनल प्रोडक्ट कैसा रहा. बहुत मुश्किल आई, बहुत फ़ोन सिलेक्ट करने में और फिर 20% फुटेज हमने यूज़ करी, 80% अभी भी हम समझ में नहीं आ रहा है कि खैर हो सकता है हम उसे किसी दूसरे वीडियो में यूज़ करें. और ड्यूरेशन भी हमें लगा था पहले कि 15-20 सेकेंड 30 सेकेंड तक का इंट्रो बनाएंगे. जानवी, आप क्या बोलना चाहोगे इस एडिट के एक्सपीरियंस के बारे में? It was so much fun. So basically I do this stuff all the time, aesthetic, and Aditya is like, oh. So एस्थेटिक की डेफिनेशन हम दोनों की एक्चुअली बहुत अलग है. जानवी की एस्थेटिक की डेफिनेशन बहुत अलग है मुझसे और मेरी एस्थेटिक की डेफिनेशन बहुत अलग है. जिस कारण बहुत सारे हमारे क्रिएटिव कोलैप्सेस हुए थे, बट इन दी एंड हमने जो बनाया वो ना तो जानवी का सोचा हुआ था ना मेरा सोचा हुआ था. हमने कुछ तीसरा ही बनाया और हमें बहुत अच्छा लग रहा है. सो आपको दिखाते हैं हमारा एडिट और ये देखिए. ये रहा एडिट.
In last 7 days, I have learnt a lot. On a very first day, I have worked towards improving my morning routine and understood the importance of physical health. On a second day, I went for food fasting and realized that how much food consumption and mental health is correlated. On a third day, I have witnessed sunrise after years and years. It was such an overwhelming experience. I have practiced meditation on 4th day and somehow learned to be in present. On 5th day, I did focus on becoming a creator from a consumer. I have realized that how production is tough and consumption is easy. I went for photo shoot at Pine Forest and learned salsa. The 6th day was all about dealing with my procrastination habit. We shot my channel intro finally. In these 7 days, I was so consumed in my own life. In all these days, I haven't lived in anybody else's life, but I was truly living in my own life. My entire life of overstimulation came in front of me. I have realized that how much I can take control over my life to change it completely. I celebrated my last day having 2 sips of wine to make sure that I'm not against it. I just don't want it to work against me. I just don't want this instant dopamine hits to control me. I want to take control over my life. It's up to you if you wanna be part of a consumer chain or a creator's life. The world needs more than 8% people to bring innovation, create solution and make it a better place. But for that, we have to stop wasting our precious time in mindless activities. We have to stop glamorizing mediocre habits. To reset your brain, give yourself a healing. Go for dopamine detox.